O Rama, the light of lights, the self-luminous inner light of the self is ever shining steadily in the chamber of our heart. Sit quietly, close your eyes, withdraw the senses. Fix the mind on this supreme light and enjoy the real Deepavali by attaining illumination of the soul, Greetings everyone. Today I, Ayushi, welcome you all in today's virtual Diwali celebration. First of all, I wish you a very happy and healthy Diwali and happy Children's Day. Dear friends, the year's most awaited Hindu festival comes at a time when India and rest of the world are facing the worst public health crisis in a century with the COVID-19 pandemic. But options are not going to stop their spirit and enthusiasm for Deepavali. The spiritual message that Diwali holds, victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance, cannot have more consonants to our lives than the time. Diwali, often referred to as the festival of lights, is perhaps the most exuberant and popular festival to be celebrated not only in India but in many regions across the globe. Diwali is called the festival of lights and is celebrated to honor Ramachandra, the seventh avatar, incarnation of the god Vishnu. It is believed that on this day Rama returned to his people after 14 years of exile, during which he fought and won a battle against the demons and the demon king Ravana. The Diwali festival in southern India often commemorates the conquering of the Asura Naraka, a powerful king of Assam, who imprisoned thousands of inhabitants. It was Krishna, a deity worshipped in Hinduism, who was finally able to subdue Naraka and freed the prisoners. Diwali celebrations may vary in different communities, but its significance and spiritual meaning is generally the awareness of the inner light. त्योहारों का देश है मेरा भारत, त्योहारों का देश है मेरा भारत, हर उत्सव पर मुझे अभिमान है। ईद, दिवाली, लोहड़ी, क्रिसमस, ये मेरे देश की अखंड शान है, ये मेरे देश की अखंड शान है। त्योहारों में एकता की महक, त्योहारों में एकता की महक, भाईचारा मेरे देश का ईमान है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान है, ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान है। एक मोमबत्ती पर्याप्त नहीं है, हर किसी को खुश और प्रकाशित करना होगा, हर किसी को खुश और बुद्धिमान होना होगा। इसी बुद्धिमता और खुशी के महत्व को साझा करने के लिए मैं सुशील सर को आमंत्रित करना चाहूँगी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतवर्ष में समय समय पर भिन्न भिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें रक्षाबंधन, होली, तीज, दीपावली प्रमुख है। दीपावली का उत्सव भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। सबसे पहले मैं आपको दीपावली का अर्थ बताना चाहता हूँ। दीपावली शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, दीप जमा अवली। दीप दीप और अवली पंक्ति, यानी दीपों की पंक्ति। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह पूर्णिमा की रात्रि होती है और अंधेरी रात्रि होती है। लोग इस दिन दीपक जलाकर चारों ओर इस रात्रि को उजियारी बना देते हैं। तो इस दिन जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में लोगों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था और अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी।
लोगों ने उनके आने से चारों ओर घी के दीपक जलाकर सजा दिए थे। अब देखिए, इस दीपावली का बहुत से दूसरे उत्सव से भी संबंध है। जैन मत के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने भी इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया। शरद ऋतु के प्रारंभ होते ही इस उत्सव का प्रारंभ हो जाता है। दिवाली के आने से पहले लोग अपने घरों को सजाते हैं, दुकानदार दुकानों को सजाते हैं, सभी रंग रोगन अपने घरों में करते हैं और सभी चारों ओर उन बाज़ारों को सजा देते हैं। परंतु दीपावली के उत्सव में एक बुराई आ गई है। लोग इस दिन आतिशबाजी करते हैं। अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, अपने मन को आनंद देने के लिए लोग आतिशबाजी करते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि इससे हानि क्या हो रही है। इससे यानी हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, लोगों को सांस लेने में कठिनाई आ सकती है और लोगों की जानें भी जा सकती है। इसी दिन दूसरे यानी बुराइयां भी व्याप्त हैं। लोग ताश खेलते हैं, शराब का सेवन करते हैं, जिससे कि उनका सामाजिक पतन हो जाता है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें इस त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। लोगों के मन में प्रसन्नता के भाव भरने चाहिए और अपने मन रूपी अज्ञान को दूर करके अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। तो अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि दीपावली के उत्सव पर आप आतिशबाजी न करें और भाईचारे का संदेश दें। अपनी शत्रुता मिटाकर सभी के साथ प्रेम पूर्वक से रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। We all have dreams, but in order to make dreams come into reality, it takes an awful lot of determination, dedication, self-discipline and effort. Dear friends, your planet needs you. To make this Diwali pollution free, say no to firecrackers and yes to happiness. Let your laughter be heard all around. Pollution free Diwali brings everywhere khushhali. So to make us aware about the same, I welcome the talented options. इसमें क्या सोचना, रॉकेट लाएंगे, सूतली बम फोड़ेंगे।
everyone. Let this Diwali burn all your bad times. Celebrate an eco-friendly Diwali. Don't act mean, go green. A child can always teach an adult three things: to be happy for no reason, to always be busy with something, and to know how to demand with all his might that which he desires. While we try to teach our children all about life, our children teach us what life is all about. Children's Day is celebrated across India to increase awareness of the rights, care and education of children. It is celebrated on 14th November in tribute to India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru, who was born on this day in 1889. Fondly known as Chacha Nehru, he advocated for children to have fulfilled education. So, to reveal the innocence through the smiles of children, here I would like to request Mrs. Sunita to tell us about Children's Day. Ma'am, please. If you carry your childfulness with you, you never become older, because childhood is the kingdom where nobody dies. A very warm welcome to all the listeners. Children are the pillars of any society, and to make them feel special, the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, started to celebrate his birthday as Children's Day. The well-said lines in the opening of my speech clearly state the importance of this stage in our life. But nowadays, the children are getting mature before they are expected. And the reason behind is the excessive use of online social platform, which expose them to a world of maturity in a wrong way. My dear children, save your innocence, because this basic feature connects you with God, who listens to you. Here I am today to awake a child inside you, because everybody must have a child in you. I don't miss my childhood, because I live my childhood with the flowers of OPS garden and with my own nursery. Believe me, if you live your life openly and in a childish way, it reduces your wrinkle, physical illness and psychological disorder. I request all the people who are listening to me, forget about your maturity once a day and live like a child. And I guarantee you, it will change your lifestyle. Always remember, growing old is mandatory, but growing up is optional. Thank you. Have a nice day. Happy Children's Day. Thank you, ma'am, for your valuable words. Live your truth, express your love, share your enthusiasm, take action towards your dreams, walk your talk, dance and sing to your music. Embrace your blessings. Make today worth remembering. Dance is one of the most divine form of arts. Dance is actually the way to express an individual's feelings. Dancers are the messengers of the gods. So let's gear up for a striking dance performance.
Thanks. It was indeed a beautiful performance. Humanity's search for an answer to the mysteries of the world is one of the main reasons that people are drawn to religion. The answers, although different from religion to religion, give people's lives purpose, meaning and hope. During Diwali, Hindus celebrate the meaning of life and its beauty. They believe that God guides them through the journey of life and that the light of God can rid places of evil and darkness. Many Deepavali festivals have come and gone, yet the hearts of the vast majority are as dark as the night of the new moon. The house is lit with lamps, but the heart is full of darkness of ignorance. O man, wake up from the slumber of ignorance. Realize the constant and eternal light of the soul, which neither rises nor sets through meditation and deep inquiry. So once again, Happy Diwali to all.